So, hello everyone. I hope you are doing well. Now, we will continue our classes on machine learning. So, we have already gone through a few classes. Now, today, let's resume from the last class. ठीक है तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ screen. I hope you can see my screen. Yes, you can see my screen, right? Yes. So, what is ML? Can you hear my voice? My voice is audible to you? सुनाई Yes, दे sir. Yes, sir. ओके गुड ठीक है रुको अब और स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को यू कैन सी माय स्क्रीन राइट यस और नो कैन यू सी माय स्क्रीन और नॉट Yes, sir. ओके Yes, sir. so what is ml ml means we have already discussed but still let's again discuss few things machine learning provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed ठीक है हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करना नहीं पड़ता है मतलब देखो बाकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमें हर एक चीज के लिए प्रोग्रामिंग करना होता है वी हैव टू प्रोग्राम फॉर एवरीथिंग बट इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग वंस ट्रेनिंग कंप्लीट देन इट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड व्हाट टू डू ठीक है so machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it learn for themselves. And the primary aim is to allow the computers learn automatically without human intervention. Human intervention नहीं होना चाहिए इसे यही एक मेन पर्पस था जिसके लिए हमने मशीन लर्निंग को डेवलप कराया है अभी राइट वी हैव डेवलप द मशीन लर्निंग फील्ड बिकॉज so that we don't want human intervention for few tasks. Okay. Now, in other words, we can say that the AI learns from experience and makes new decisions independently, and it is something that gives automations of intelligent behavior. Intelligent behavior, देखना यहाँ मैंने रेड में पुट किया है. That means system changes its behaviors intelligently without human interfere. Means it will learn by itself. We don't need to program explicitly to adopt the new changes, variations of the system. जो भी नया changes होगा, the system will automatically decide what to do at that time, right? That's why the term we have used here is intelligent behavior. Now if you look at the figure diagram here you can see automatically learn यहाँ पे कुछ आपको terms मिल रहा होगा automatically learn explicitly program learn for themselves without human intervention, improve from experience. You please take a screenshot of this because these terms are the ones that actually define this ML field. Okay. Now need to understand these terms and its meaning. So users got it. Right. Okay. Now, एक example देखो. Programming style, conventional and AIML programming. You all know that you did Java programming, right? C++ programming. But remember, what you have done is some kind of traditional or explicit programming. जैसे आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आपने क्या किया था स्क्वायर रूट के लिए प्रोग्राम बनाया था परमुटेशन निकालना था तो परमुटेशन के लिए प्रोग्राम बनाया था राइट बट यहाँ जिस जो ए आई एम एल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम को ट्रेन करते हैं एक मॉडल बनाने के बाद ट्रेन करते हैं और वो मॉडल नेक्स्ट टाइम नया डेटा के लिए वो खुद ही खुद डिसाइड करते हैं कि व्हाट टास्क टू बी डन और व्हाट इज द प्रॉपर मींस वे ऑफ डीलिंग द न्यू डेटा ठीक है तो दैट्स व्हाई हमने ये बोला है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग जो अभी तक के आप लोगों ने पढ़ा था और एआईएमएल प्रोग्रामिंग जस्ट यू हैव गॉट इट राइट अब look at this diagram what you can say from this diagram इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है
This side conventional and this side ML programming. Can you tell me a little bit on this diagram? इस फिगर के बारे में कुछ बता पाओगे? क्या लग रहा है इस फिगर को देख के, क्या समझ रहा है? Any idea? Any idea? Don't just fear that I will just you will be wrong or I will scold. No, you just try. Yes. देखो इस साइड क्या दिखाई दे रहा है? This side all the green leaves are there, right? And this side no such leaves are there. What actually tries to mean? कॉन्वेंशनल में मैंने क्या बताया था? ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, राइट? एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग होते हैं, जिस पर्पस के लिए बना रहे हो आप कोई प्रोग्राम, उसी पर्पस को कर पाएगा, उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा. अदरवाइज इफ यू गिव सम न्यू प्रॉब्लम इट विल नॉट सोल्व दैट प्रॉब्लम. यस. सो इन केस ऑफ कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हमें बहुत कुछ चीज डिफाइन करना पड़ता है, और बहुत कुछ चीज डिफाइन करके हम उस पार्टिकुलर एक वे के लिए, हमने एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो प्रोग्राम को बनाते हैं. और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑल जेनरिक प्रॉब्लम्स इट कैन सॉल्व, बट ओनली थिंग वी नीड टू ट्रेन इट प्रॉपरली. क्या आप बता सकते हो? डोंट वरी, डू वन थिंग, यू टेक ए स्क्रीनशॉट. मैंने पूरा हिंट दे दिया है, बाद में बता देना ग्रुप में कि व्हाट एक्चुअली यू मीन यू गॉट इट फ्रॉम दिस डायग्राम. ठीक है? इज इट ओके? यस सर। ओके. नाउ एक एक एग्जांपल देखते हैं हम. हाउ टू आइडेंटिफाई इफ ए स्ट्रिंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस और नॉट. तो ए स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्मेट लाइक लोकल पार्ट एट द रेट डोमेन इज ए वैलिड ईमेल. ठीक है? जैसे तुम लोगों का क्या है, से मेरा ईमेल आईडी है divyosdivara@kzu.ac.in. ठीक है? वो डोमेन है एट द रेट के बाद, और बाकी लोकल पार्ट है. So local part may use any of these ASCII characters, uppercase, lowercase, Latin letters, A to Z, right? Digit 0 to 9. Special characters not allowed. Special characters you guys know, right? Star हो गया, S हो गया, ये सब allow नहीं कर रहा है. Dot provided that it is not the first or last character. And let's assume white space is not allowed. And then main part. Okay. Now, conventional way, we have to write a regular expression based on the rules. Rules means जो अभी मैंने आपको बताया था, ये rules है. तो based on the rules, above rules, to match the string with that pattern. And in any high-level language, this is really a trivial task. ठीक है? Regular expression हमें बनाना होगा. We have to create a regular expression so that this regular expression will check the pattern with respect to this particular rules. Means it will follow these rules. If someone is violating the rules, then that will not be accepted as a proper means valid email. ठीक है? Now machine learning way. When we approach this same task with machine learning, we do not write a program to match a specific pattern. ठीक है? यहाँ हमने बोल्ड में लिखा है, तो इसका मतलब है वी आर फोकसिंग हियर मींस वी डू नॉट राइट ए प्रोग्राम टू मैच ए स्पेसिफिक पैटर्न. A machine learning program is written to find patterns in any given data set, and the program itself does not know anything about the type of patterns it need to identify. ध्यान देना, क्या बोला मैंने कि ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम इज रिटन टू फाइंड पैटर्न्स, राइट, फॉर एनी डाटा सेट. डाटा सेट का मतलब है, तुम लोगों को अभी तक मैंने बहुत बार भी बताया है कि डाटा सेट मींस कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स. जैसे स्टूडेंट डाटा हो गया, सपोज वेदर डाटा हो गया, राइट. तो जो भी मशीन लर्निंग प्रोग्राम होगा, तो वो उस डेटा सेट से वो पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. एंड उससे पहले मींस बिफोर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इट हैज नो आइडिया दैट किस टाइप का पैटर्न ये फेस करने जा रहा है, राइट. सो इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा सेट.
ठीक है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, वो पैटर्न के बारे में उस पार्टिकुलर डेटा सेट से लर्न करना होगा. तो डेटा needs to be prepared in such a way that it highlights the rules, right, that govern the distinctions between what's correct results and what's not. From the data set, the model is learning, right? So that's why we need to design that model, uh, means accurately, and also the data set should consist of those data from which it can correctly learn about the valid or invalid email ID pattern. Okay. Now look at this. क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ ये आपका लोकल पार्ट, होस्ट नेम एंड रिजल्ट. और रिजल्ट क्या होना चाहिए आपके पास? व्हाट रिजल्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग? Is it a valid email or it is not a valid email, right? This is, we are considering some examples like this one, h1 at the code fire.in. ASCII character is there, of course. HI falls under ASCII characters, so yes. ठीक है. स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है. डॉट हैंडलिंग है, राइट. स्पेस प्रेजेंट नो. स्पेस प्रेजेंट रहेगा तब भी हम इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट. गो थ्रू द रूल्स. इस रूल्स को पहले एक बार देख लेना. रूल्स हमने क्या बताया था? दीज आर द रूल्स. हाँ, you just take a screenshot. So these rules are now followed to check the different input emails. ठीक है. मेन चीज ये है कि उसमें स्पेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए. इफ स्पेशल कैरेक्टर इज देयर, then see, this one is ab space c @codefire.in. Here special character is there, right? तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे? It is not a valid email, so valid email no. Similarly, in the first case, no special character, no space, @present, host name valid, so that is a valid. Okay. But keep yourself mute if you are not taking case of. Okay, I'm muting you. Okay, no problem. So similarly, we can check all the other email IDs. These are the feature sets. ये feature set है. Features मतलब properties. Remember, feature means properties. We have to identify the features. यहाँ पे क्या क्या feature था? ये यहाँ पे ASCII characters होना चाहिए. उसके बाद @ होना चाहिए. Space नहीं होना चाहिए. Right? Then domain name होना चाहिए. So these are the feature sets. We have correctly checked all the feature sets, and accordingly, we have found the result. Okay, what happens if the rules to identify email changes? Let's say now we will allow this particular character as a valid character. पहले हमने डिक्लेयर किया था invalid, और स्पेशल में अंदर invalid था. Now हमने रूल चेंज किया और बोल दिया कि ये अभी valid character है. Now, with conventional programming, simply modify the regular expression to allow for this new symbol to be part of the email. ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग था उसमें हमने क्या किया था? रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था. अब उसमें we have to modify it so that it will allow this particular character as a part of the valid email, right? But however, with ML, all we have to do is to modify the training data. Right, because training data से ही हमने train किया था. So whatever the behavior of the training data in the data set, that will actually training our model. So we need to modify the training data to update the data corresponding to a future set and retrain the ML algorithm to get the new model. ठीक है, पहले फिर से हमें ट्रेनिंग डाटा को मॉडिफाई करना हुआ, और उसके बाद हमने क्या किया? फिर से ML algorithm को ट्रेन किया, right? So that new changes now will be reflected during the training process. Accordingly, algorithm will perform accurately. So in essence, what we can say, ML is a completely different way of looking at a problem. Got it? समझ में आ रहा है? ML is applied to problems that do not have clearly defined fluid rules. Hence, solving that with conventional programming will be more expensive. Okay? Then ML programs learn and make decisions based on the data. As the data changes, the decision changes, right? And since humans also learn the same way, so by observing what is right and what is wrong around us, hence we term the program as artificial intelligence or
मशीन लर्निंग। ये हम ह्यूमन को ही मिमिक कर रहे हैं, हम चेंजेस को देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम उस चेंजेस को एडॉप्ट करते हैं, राइट। सिमिलरली उसको एडॉप्ट करने के लिए हमें खुद को और ट्रेन करना पड़ेगा। एम आई राइट? सपोज आप लोगों का क्लास कल से फ्रॉम 7 AM इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, 7 बजे से स्टार्ट होगा सुबह, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है, तो एडॉप्ट करने के लिए आपको चेंजेस कराना होगा, ट्रेन कराना होगा। सिमिलरली एमएल में भी हम कुछ चेंजेस हो गया तो उस पार्टिकुलर डेटा सेट में जो भी चेंजेस होगा हम ट्रेनिंग के दौरान उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। वी नीड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर को पूरा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं एमएल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लुक एट दिस डायग्राम, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, डेटा, प्रोग्राम, कंप्यूटर, आउटपुट, सिंपल। आपने डेटा डाला, प्रोग्राम बनाया और आउटपुट मिला। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है जो आप लोग बनाते हो, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है? डेटा, आउटपुट, कंप्यूटर विल बी ट्रेन, computer means I mean say model will be trained accordingly, model will decide for the new data what to do। ठीक है, ये डिफरेंस है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ट्रेडिशनल में डेटा प्रोग्राम डायरेक्टली वी गेट द आउटपुट, बट मशीन लर्निंग में हम मॉडल बनाते हैं और उसके लिए हमें डेटा और आउटपुट की भी जरूरत पड़ती है। पहले क्या हुआ था वो देखते हैं। फर्स्ट we have to means train the model, means what exactly happened earlier because of that particular data, accordingly we train our model। so that's why हमने यहाँ लिखा है data, output and then model। ठीक है, so learn solution implicitly, but here the output coming from the explicit programming। okay, need to provide solution explicitly, so it may come in MCQ type। so in case of traditional programming, need to provide the solution explicitly, but in case of ML, it will learn the solution implicitly। Now there are again two terms, deterministic versus non-deterministic। Now, in deterministic algorithm, for a given particular input, the computer will always produce the same output going through the same stage, right? Always passing through the same sequence of states. But in case of non-deterministic algorithm, for the same input, the computer may produce different output in different routes। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। In deterministic algorithm, for a given particular input, एक particular input के लिए the computer will always produce the same output going through the same state। same state से जाके वो एक ही output, same output produce कर रहा है for a same given particular input। ठीक है, बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या हो रहा है? कंप्यूटर डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, और इसके लिए वो डिफरेंट स्टेट से भी जा सकते हैं। यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ओके, एक तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यू हैव गॉट इट, एंड अनदर वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, राइट। इन द केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा व्हाट हैपन? for the same solution, for to reaching the same particular terminal, you may go through different states, right? There may be more than one way from the same state to the next state। are you getting my point? But in the case of deterministic, what happened? The state to state this transition that will be finite। ऐसा नहीं है कि दो तीन अलग अलग वे होगा, आपको एक पार्टिकुलर वे से जाना पड़ता है डिटर्मिनिस्टिक में, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपको एक स्टेट से और डिफरेंट वे हो सकता है दिस नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम डिफरेंस को देखते हैं। इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक, फॉर अ पार्टिकुलर इनपुट द कंप्यूटर विल ऑलवेज गिव द सेम आउटपुट, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फॉर अ पार्टिकुलर इनपुट द कंप्यूटर विल गिव डिफरेंट आउटपुट ऑन डिफरेंट। ठीक है, हर बार आपको आउटपुट अलग अलग मिल रहा है। जैसे कि आप लोग जेनेरिक एआई देखोगे ना, ये इफ यू हैव परफॉर्म सम एक्सपीरियंस इन केस ऑफ जेनेरिक मींस जनरेटिव एआई, देन यू विल सी दैट इट मे गिव यू डिफरेंट आउटपुट एट डिफरेंट टाइम्स। एक ही चीज को आप अलग अलग टाइप से आउटपुट मिल सकते हैं, राइट। देन इन डिटर्मिनिस्टिक कैन सोल्व द प्रॉब्लम इन ए पोलिनोमियल टाइम। पोलिनोमियल टाइम में ये सोल्व करके दे देंगे। बट इन द केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इट कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम इन पोलिनोमियल टाइम। ठीक है, I hope you guys know about the polynomial time। Those who are not Kritika Modi, please mute yourself or else I'm muting you।
Okay. Sir, I am mute. Oh, sorry. Then who is there? Okay, no problem. Don't worry. Akash Juti just entered. So anyway, then I hope you know what does it mean by solving a problem in polynomial time. एक definite time में आप उस problem को solve कर रहे हो, right? कभी कभी polynomial time में solve नहीं कर मतलब solve नहीं भी हो सकता है, तो exponential time भी आपको लग सकता है, right? Then can determine the next step of execution in the case of deterministic. Okay, in the case of non-deterministic, it cannot determine the next step of execution. In deterministic, no randomness is there, but in case of non-deterministic, high degree of randomness. Okay, तो ये deterministic और non-deterministic का difference हो गया. Let's see some example like calculation of square root, log, addition, ये सब क्या हो गया, deterministic के अंदर आ गया. और नॉन डिटर्मिनिस्टिक आप बोल सकते हो कि आप ड्राइवरलेस कार चला रहे हो और आपके सामने कुछ पेडिस्ट्रियन आ रहे हैं, तो उस पेडिस्ट्रियन को डिटेक्ट करना, लाइक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन हियर वी हैव साइटेड, so that falls under non-deterministic. I hope it is clear to everybody. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, in case of deterministic problems, we have some problems, example like, we are adding two numbers, multiplying two numbers, circle का area निकाल रहे हैं, ठीक है, maturity amount calculator, salary calculator, factorial, these are some programs. Okay, but नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स में जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, पेडिस्ट्रियन डिटेक्ट करना है, तो सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, और यहाँ आपको दिखेगा हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन, राइट? देखो, जब इमेज होता है, टेक्स्ट तो कोई भी डिटेक्ट कर लेता है, राइट, बट जब इमेज मीन्स आपने कुछ लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये मैंने क्या लिखा है, राइट? तो for that, we have to again take the help of some non-deterministic programs, or you can say computer vision programs. So there we try to recognize the object. यहाँ जैसे आप लोगों को दिख रहा है हैंड रिटन, ये जीरो को अलग अलग लोग जीरो अलग अलग टाइप से लिख रहा है, सेम चीज, वन को अलग अलग टाइप से लिख रहा है, सिमिलरली टू थ्री फोर, पर हमें रिकॉग्नाइज करना है कि इस टाइप का पैटर्न मिले तो दैट इज वन, और सपोज दिस इज थ्री, ठीक है, so this is one example. Is it clear? Okay. Yes, sir. Similarly, one more example, you can see these are the examples of banana. So this one is all green, this one is green with a trace of yellow, then this one is more green than yellow, this is more yellow than green, this is yellow with a trace of green, then this is all yellow, and this one is all yellow with brown speckles. ठीक है, तो ये सब से आपका एक जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन लाइक दिस वन, आप यहां से आपने ट्रेन करा लिया और यहाँ ये बनाना समझ में आ गया, तो आप इस पार्टिकुलर बास्केट से आपके मॉडल के थ्रू क्या डिटेक्ट करा सकते हो कि दिस वन इज अगेन बनाना, ठीक है, and this all possible because we have some data, जैसे कि इस केस में ये डेटा था हमारे पास, these are the data of banana, right? So ML का जितना भी possible pattern recognition हुआ है, that is all because of data, and that's why we call now data as new diamond or new, यहाँ पे जैसे कि in 2017 economists broadcast data is the new oil. Then from AI and ML point of view, it is better to say that data is the new crude oil. Okay, data is the new crude oil. In that, data must be processed, cleaned, transformed properly before it can deliver real impact. तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल, देन वी हैव टू सिलेक्ट algorithm, we have to train it, then we need to train it means whenever train complete, that means we have built our model, we have developed our model. Now next thing is we have to validate that model, evaluate that model, and if possible we will try to optimize the model. So model means what? Train the algorithm which can learn and improve its performance with data.
ओके, सो आपको कोई पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल, तो क्या जवाब दोगे? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? आपका आंसर सिर्फ एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर? ए मॉडल मीन्स ट्रेन एल्गोरिथम। ठीक है, आपने जो आपके पास तो एल्गोरिथम ऑलरेडी है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, के मीन्स है, के नियरेस्ट नाइबर्स है, राइट, लीनियर रिग्रेशन है, बट वो सब मॉडल नहीं है। मॉडल कब बोलेंगे हम? जब उस एल्गोरिथम को हम ट्रेन करेंगे अपना डेटा सेट का, ट्रेनिंग डेटा सेट के थ्रू। ठीक है, once it training complete, then only we'll call it as trained, as model. Is it clear, everyone? Model term? Yes, sir. Okay, good. So model means trained algorithm that can learn and improve its performance with data. And also we can call model as an encapsulation of algorithm and data. क्योंकि सिर्फ एल्गोरिथम को हम मॉडल नहीं बोल सकते, एल्गोरिथम को ट्रेन करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको डेटा, राइट? सो डेटा इज नीडेड, so you can see data fits to the algorithm and hence it is been trained, so we have the model, right? And model will be evaluated through some evaluation metrics like questions and answer. So accordingly it will also generate न्यू डाटा, राइट? हमारा तो मॉडल बन गया, तो हम नया डाटा हम उस मॉडल से भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक रिकर्सिव प्रोसेस है दैट विल बी कंटिन्यू एंड ओवर द टाइम इट विल इम्प्रोवाइज इटसेल्फ। ओके, so this the means things that we have covered already, but still uh, many days we have not taken any class, that's why I have revised. I think it is clear to everybody, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, just a minute. So we have just seen the model development life cycle. इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? The process of training an algorithm is known as modeling. Modeling को हम modeling मतलब क्या है? जो algorithm को हम train करते हैं, that process is known as modeling. Okay, and then training algorithm. The process of training an ML algorithm involves providing an ML algorithm with some training data to learn from, and the training data must contain the correct answer, right, which is known as a target or target attribute. And this learning algorithm finds patterns in the training data that map the input data attributes to the target. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the training data, right? Then we have the model, right? Then input data for the testing. ये तो training process है. For testing we have input data, then क्या होगा? ये डेटा में कोई भी लेवलिंग नहीं होगा, so it will predict, and if prediction is correct, then we will say that our means algorithm or not algorithm, our model is performing well. So prediction output, comparison for performance evaluation. So फिर से एक बार देखो, one data set, उस data set को हमने divide किया, training and testing. Training data to algorithm, then test algorithm accuracy means for with the help of test data. ठीक है, एल्गोरिथम से मॉडल बनाया हमने, किससे? ट्रेनिंग डेटा से, और उस ट्रेनिंग डेटा को हमने टेस्टिंग किया टेस्ट डेटा से। ओके, नाउ मॉडल इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन, these are basically four types of cross validation. A validation method बहुत important है, we'll discuss of course. Now first one is holdout method, that is training sample. Oh, this is going to be ended. Okay, what we'll do one thing, we'll continue this part in tomorrow's class. I think tomorrow we have class. No, tomorrow night. No, Saturday, sir. Saturday we'll discuss from here. We'll continue from here. That is the model evaluation part. Okay. So we'll discuss some means evaluation process. Like this one is very important. K-fold cross validation. Okay, K-fold cross validation is very important. We'll discuss from there. And okay, then let's take the attendance. Just 1 minute. Okay, let me check. I hope all of you have joined, right, in the classes. Anyone absent?
Let me take the attendance then. DMSL, ML, okay. Just 1 minute. Roller 1, 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, 5, 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, 10, 11, 12, Yes, sir. 13, 11 pages, sir. okay, 13, Present, 14, sir. Keshav Sonwal, 15, 16, Present, sir. oh, 16, na? Yes, sir. 17, 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, 21, 22, 23, Sir, 21. Present, sir. 23, Present, sir. 25, Present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, 30, Present, sir. 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, 38, 39, 40, Present, sir. Present, sir. 41, Present, sir. 42, 43, sorry, 43, Asa, 45, Present, sir. 46, 47. Present, sir. Okay, अभी एक काम करो. Can you hear my voice? Yes. Yes, sir. आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी राइट सब्जेक्ट जो है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो क्या करना ये हमारा ये सीआर कौन है कृतिका. हेलो. Yes, sir. आप एक काम करो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ. ठीक है उसमें मुझे भी ऐड करना और फाइजुल सर. हेलो. Okay, sir. फाइजुल सर को Yes, ऐड sir. Yes, sir. करो. और टाइमिंग आप ले लो. जैसे कि आप लोग ले लो 2 to 3 या तो 3 to 4 कुछ टाइम ले लो. 3-4 दिन का. ठीक है. ये 4 क्रेडिट कोर्स है या 3 क्रेडिट कोर्स है. Sir, एक मिनट check कर. 3 क्रेडिट. Yes, sir. 3 credit. ठीक है. तो मैं बोल दूंगा फाइजुल सर को अभी आप लोग सबसे पहले तो एक काम करो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम से एक ये खोलो व्हाट्सएप ग्रुप. और उसमें डालना BCA 5th सॉरी 6th एंड कोर्स कोड होगा तो डाल देना और उसमें सारे स्टूडेंट्स और ये क्या बोलते हैं हमारे फाइजुल सर को ऐड करो और मुझे ऐड कर दो. ठीक है. और उसमें आप Okay. ऑनलाइन क्लास के लिए जो आज बात किया था ना सागर आए थे तो वी हैव मैंने बोल दूंगा अभी फाइजुल सर को भी. तो वो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे. ठीक है. अभी से कंटिन्यूअस क्लास होगा डोंट वरी. इज इट ओके. Okay, sir. सर मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूटीन क्लास होगा या तो फिर मतलब रूटीन क्लास इवनिंग में. रूटीन क्लास होगा. टाइम टेबल ओके में सर. क्या टाइम लिखा है बताओ. सर का क्लास वेडनेसडे तो एंड 4 to फ्राइडे 5 होते हैं. रुको रुको एक जन बोलो कोई क्या बोल रहा. टाइमिंग क्या है. सर
वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4 to 5 है। वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ओनली वेडनेसडे एंड फ्राइडे? वो तो 2 क्लास ही हुआ। ठीक है, एक काम करो, ग्रुप बना के उसमें टाइम टेबल डाल दो मुझे, मतलब। तो फ्राइडे 2 hours का है ना, इसीलिए शायद ओ तो। हाँ, तो भी 2 आवर्स का है तो वही है। तो आप एक काम करो, वो ग्रुप बना के वो टाइमिंग भी डाल दो। और जो भी टाइमिंग रहेगा उससे पहले एक वो जूम्स का लिंक क्रिएट करके डाल देना वहाँ पे। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है आपको? तो क्योंकि वो नया है ना, यस सर। समझना पड़ेगा, तो आप एक जूम लिंक कोई भी बना के वहाँ पे डाल देना। काइंडली अटेंड सर, प्लीज अटेंड द स्टार्ट द क्लास बोल के दे देना, और स्टार्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, आप प्रॉब्लम सोल्व। ओके। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू Yes, sir. सर। Yes, sir. ओके। Thank you, sir. थैंक यू।